Hello, good morning, students. In the last lecture, we discussed certain measures taken by the government to curb black money, to unearth black money. In this video lecture, we are going to discuss one of the most important topics of your syllabus, demonetization. It is a very interesting topic. टीवी में लाइव डिबेट में हमने बहुत बार डिमोनेटाइजेशन का जिक्र देखा है, बहुत डिबेट हुई, बहुत डिस्कस हुई. So today we will discuss this topic, demonetization. On 8 November 2016, our Prime Minister Narendra Modi announced demonetization. So in this video lecture, we will discuss what is demonetization, what were the objectives of demonetization, what are the advantages of demonetization, and what are the disadvantages. When our Prime Minister announced demonetization measure, it was considered as a historic step. It was considered as a master stroke. अब तक ब्लैक मनी को कब करने में जितने भी मेजर्स लिए गए, उसमें सबसे इफेक्टिव ये होगा ऐसा माना जाता था. जैसे इंडियन इकोनॉमी विल टर्न फ्रॉम Indian community will mindset of Indian community will turn from cash loving community to cashless economy. ऐसा please what the belief. Okay, so in this video lecture we will discuss what exactly happened after demonetization. Has Indian economy gained or has Indian economy lose something after demonetization? So what is demonetization? Demonetization as an act of stripping a currency unit of its status as legal tender. Okay, ban of currency notes. We all know that highly denomination currency notes of 500 and 1000 rupees note, 500 and 1000 rupees notes were banned. They were ceased to be legal tender. Okay. In simple word, all unit of currency must be retired and replaced with a new currency units. नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि अभी 500 और 1000 रुपीस के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. इट वॉज स्ट्रिपिंग ऑफ करेंसी units of its status as a legal tender. Okay. Now, what are the objectives? Obviously, the first and the most important objective is to curb black money. To unearth black money, because we discussed in the last video lecture that the black money or unaccounted money constitute about 40 to 50% of total GDP. So the first objective is to unearth black money, to curb black money, to eliminate fake currency or counterfeit currency. Okay, काउंटरफिट करेंसी है, ब्लैक फेक करेंसी है, उससे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. सो इट वाज आल्सो द ऑब्जेक्टिव टू एलिमिनेट फेक करेंसी और काउंटरफिट करेंसी, टू स्ट्राइक ऑन टेररिज्म. ओके, टू स्ट्राइक टेरर फंडिंग को स्टॉप करना एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था. ओके, टू मेक फॉर्मल इकोनॉमी एंड टू बूस्ट डिजिटाइजेशन. तो वो साथ में ही डिस्कस करेंगे. That Indian economy is considered as informal economy. या फॉर्मल ट्रांजेक्शन से इनफॉर्मल ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं. ओके, द ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स. बैंकिंग सिस्टम में नहीं आते हैं पैसे. सो इंडियन इकोनॉमी इज मेजर पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज इनफॉर्मल इकोनॉमी. एंड another objective is to boost digitization, less cash economy or cashless economy. Okay. So these were the objective. Now, what are the advantages? Tackling black money. When Prime Minister Modi announced the digitization measure, it was a strong message to black money holders or the people engaged in illegal activities that now government would not tolerate any illegal activities, black money. So it was a biggest step to unearth black money. So black money कुछ हद तक
up to certain extent, it has tackled the black money. Second, digitization. This is a major advantages of black demonetization. After demonetization, the number of transaction, digital transaction has significantly increased. लोग यूज मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग ऐप जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ऑल डिजिटाइज जो 2016 से पहले था डिजिटाइजेशन और अब जो डिजिटाइजेशन है उसमें काफ़ी फर्क है. ओके, दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ demonetization. Second, increased tax revenue. Tax revenue has also increased significantly after demonetization measures. The data has been given that the individual taxpayer has increased from 2.22 crores to about 2.79 crores within a year. 17.3% increase in number of returns filed. Okay, so government has received more revenue, more tax revenue after demonetization. Increase affordability of loans. जो भी मनी है वो रिटर्न हुए वो सिस्टम में आ गए. अबाउट 99% मनी हैज बीन रिटर्न टू बैंकिंग सिस्टम. ओके, तो बैंक में so due to increase in supply of money, obviously rate of interest has significantly declined. और जैसे rate of interest decline होता, obviously it will help to promote investment. लोन्स के जो रेट थे, लोन्स के रेट कम हो गए, so it will make more affordability, it will increase affordability of loans. Cleansing real estate sector. Real estate sector in India is a very, very important sector. It contributes a lot in GDP. It providing employment opportunities to large number of people. But at the same time, it is true that it is a hub of corruption. It is a hub of generation of black money. जो अनअकाउंटेड मनी है वो गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट में जनरली लोग स्टोर करना चाहते हैं. सो इट इज अ मेजर स्टेप टू क्लींजिंग द रियल एस्टेट सेक्टर. उसके बाद गवर्नमेंट ने रेरा कानून भी पास किया है, उससे भी रियल एस्टेट को क्लींजिंग करने में बहुत हेल्प मिली है. टैकलिंग टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी. इंसर्जेंसी का मतलब है विड्रो, गुजराती हिंदी में हम लोग बोले उसको विड्रो. So we all know that one of the major objective of demonetization is to strike on terrorism. Jammu and Kashmir Valley, where cross-border terrorism, और उसके सबसे ज़्यादा होते थे टेरर फंडिंग. और टेरर फंडिंग डिमोनेटाइजेशन के बाद टेरर फंडिंग कम होगा और कुछ समय तक ये जो टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटीज़ है उसमें गिरावट आई. So it was also it helps a lot in tackling terrorism and insurgency. So these are the major advantages of demonetization. Now what are the disadvantages? So disadvantages, first is created chaos. Chaos create हो गया. Suddenly, it was a very sudden decision. Suddenly प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस दैट कल से 500 और 1000 रुपीज के नोट्स बंद हो जाएंगे. हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड. In 1978, when 1000 rupees notes were banned, it was constituted only 2% of currency. And in 2016, the 500s and 1000 rupees notes were constituted 86% of करेंसी. आप फर्क देखिए लोग. अगर 86% करेंसी आप सडनली बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा. लॉन्ग क्यूज हम लोगों ने देखा. मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन दीजिए मुझे, सब मैं ठीक कर दूंगा. 50 it was almost about 6 months. The situation was near emergency. And here it is very painful to note that more than 100 people had lost their lives in demonetization. घंटों तक लाइन में खड़े लोग और
लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी. ओके, so this was the major disadvantage, one of the most important disadvantage of demonetization. Middle class and poor class is affected. Obviously, poor class, middle class is affected too much during demonetization because they generally undertake their transaction in cash. They don't have uh, the accessibility, they don't have the expertise of digital transaction. Okay, so middle classes and poor classes have other affected very badly during demonetization. One stop black money generation. The most important objective of black money was to of demonetization was to unearth black money, to curb black money generation. मगर जितना ब्लैक मनी होना था उतना नहीं हुआ. हाँ, 86%, 500 और अबाउट 5 जो टोटल नोट्स थी 500 और 1000 की, वो अबाउट 15.41 लाख करोड़ हाँ थी, और उसमें से अबाउट 15.30 लाख रुपीज की नोट्स तो रिटर्न हो गई, अबाउट 99%. इट मीन्स दैट ये जो डिमोनेटाइजेशन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है ब्लैक मनी को कर्ब करना, वो फुलफिल नहीं हुआ. ब्लैक मनी आइदर it was just transferred to other country through hawala koban, or it is stored in other estate like real estate and gold silver usme stored ho gaye. So it did not help to stop black money generation. Real estate frauds. I told earlier that real estate is a very, very important sector of Indian economy. It contributes about 8 to 9% of GDP. Lakhs of people, it provides lakhs of people to employment opportunity. It hits very badly. डिमोनेटाइजेशन का सबसे अगर खराब असर किसी को हुआ था तो वो रियल एस्टेट को. पुअर लेबरर्स, उसको बहुत दिक्कतें हुई थी. ओके, सो रियल एस्टेट हैज सेक्टर was very badly affected after demonetization. Rural population affected. Rural population, generally farmers, they could not take their many agricultural operation due to lack of money, due to cash. Okay, generally they are making their transaction in cash. They don't they did not have that time digital मतलब डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है उसकी एक्सपर्टाइज नहीं थी उनके पास. सो ऑब्वियसली रूरल पीपल हैड अफेक्टेड very badly. Recession, one of the major disadvantage of this demonetization is this recession आ गया उसके बाद. So in 2016 GDP the rate was 18.26%. In 2017 it was 7.04%. And in 2018 it is 6.12%. Our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, he is a leading economist of India, और उन्होंने पार्लियामेंट में यही कहा था कि डिमोनेटाइजेशन से अपनी जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में 2% तक का फॉल हो जाएगा, और विच एग्जैक्टली हैपन. द डेटा सो 2016 में कितना ग्रोथ रेट था? 8.26%, which has reduced to about 6.12% in 2018. Okay, so these is the main disadvantages of demonetization. सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत हुई है इसमें तो वो है माइग्रेंट लेबरर्स. आप लोगों ने सब लोगों ने टीवी में देखा ही होगा कि माइग्रेंट लेबरर्स को कि thousands of kilometers उसको चल के जाना पड़ा. ओके, many migrants labor died due to death situation etc. So worst affected अगर कोई people है तो वो है migrant laborer. So in this video lecture we discuss what is demonetization, what were the objectives of demonetization, what are the advantages of demonetization, and what are the disadvantages of demonetization. Lastly, whether demonetization is successful or not, it is questionable. मैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ.
आई एम जस्ट रिपीटिंग कि देयर वर थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन. फर्स्ट, टू कर्ब ब्लैक मनी, टू eliminate fake currency or counter currency, and third, to fight against the cross border terrorism, to stop terror funding. ये तीन क्वेश्चन का आप आंसर देखिए. क्या ब्लैक मनी कम हुआ है? क्या काउंटर फिट करेंसी, फेक करेंसी अब नहीं है? और थर्ड, क्या टेरर फंडिंग स्टॉप हो गई है, कम हो गई है? ये तीन क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढिए, उसमें ही आपको मिल जाएगा वेदर डिमोनेटाइजेशन इज सक्सेसफुल और नॉट. ओके, थैंक यू वेरी मच.